Welcome to SANDEEP'S Physics. Now I discussed about wave optics introduction in my class. Due to my students' demand, then I teach about wave optics introduction class. Then after all these properties of wave, nature of light, I have teach you. नमस्कार पिला माने केमिति अछंती समस्ते एतिकी मोर इच्छा पिलांकर ह्यूज डिमांड जो मु ओडिया रे भी ए चैप्टर टाको पढ़ेबी समस्ते भलरे थांतु समस्ते भलरे रहंतु वर्तमान में स्टार्ट करिबा वेव ऑप्टिक्स इंग्लिश सहित ओडिया रे भी पढ़ेबी व्हाट इज वेव इज जस्ट ए डिस्टर्बेंस इट इज जस्ट ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम This statement was first of all defined by Huygens, but he did not know about the nature of the wave. The wave is transverse wave or longitudinal wave. We know in first year class, in 11th class physics, wave motion, transverse wave or longitudinal wave. Longitudinal wave we know if the particle making parallel to the direction of the propagation of the wave, this wave is called longitudinal wave, and the wave is and the particle is making perpendicular to the direction of the propagation of the wave, then this wave is called transverse wave. But Huygens was a first scientist. He was introduced the wave nature of light, but he did not know about the nature of the wave. According to him, it is just a disturbance. It is just a disturbance in a medium, and that medium, this wave is traveled. This medium is ether. Ether is an imaginary medium. तांको मत अनुसार थिला इथर गोटे इमेजिनरी मीडियम जोटा कि से कही इथर हूँ गोटे इमेजिनरी मीडियम जो थी कि लाइटा इजिली लाइट वेवटा इजिली पास करके जापर आउ से मीडियम रो डेंसिटी खूब कम थिला किंतु किछि वर्ष पर आमर आसिले मैक्सवेल आफ्टर फ्यू इयर्स according to Maxwell's electromagnetic theory, according to him, light contains two components. First one is electric component, second one is magnetic component. Both these components perpendicular to each other and also with the direction of the propagation of the wave. बुझिपाल पिलाने किछि वर्ष पर मैक्सवेल आसिले से कहले लाइट रो दुईटा कंपोनेंट अछि जोटा कि इलेक्ट्रिक आ मैग्नेटिक कंपोनेंट आउ से माने परस्पर सहित परपेंडिकुलर होगी आगू को बढ़ती ता सहित से ही कही जे लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर एथु जना पड़ला जे लाइट वेवटा ट्रांसवर्सली आगू को बढ़े प्रोपागेट करे देन बाय टेकिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट वी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट सच दैट इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन पिला माने आमे समस्ते वेव नेचर ऑफ लाइट विषय पढ़ा वेव्र प्रॉपर्टीज अच्छी जोटा कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन सेटा तो पर पढ़ा देन एबे आमे स्टार्ट करिबा वेव फ्रंट कौन जोटा कि हाइजेन को मत अनुसार आमे पढ़ा हाइजेन इंट्रोड्यूस द वेव फ्रंट एंड हाइजेन्स प्रिंसिपल आमे आज ये पढ़ा तो वेव फ्रंट कौन व्हाट डू यू मीन बाय वेव फ्रंट Wavefront of a wave at an instant of time, it is defined as locus of all the particles of the medium, locus of all the particles of the medium which can be disturbed at the same instant of time and are at the same phase of vibration. तुम समस्त पिला माने देखि थिबो आमे जेतले पोखरी के जाऊ जदि गोटे टेकाटे पकेबा तो ता चारिपटे वेव फॉर्मेशन हुए समस्त देखि एमती तार अपर भ्यूटा एमती टेकाटे पकेब व्हेन यू फॉल ए स्टोन ऑन द पॉन्ड देन यू फॉल दिस टाइप ऑफ स्फेरिकल वेव्स फर्स्ट वन इज क्रेस्ट एंड ट्रफ क्रेस्ट आउ ट्रफ जोटा कि तुम पढ़ शिखर आउ गह्वर एमती है आगू एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है आगू बढ़ तो से जो अपर भ्यूटा को ही आम कहूचे ये फेजटा को ही कहूचे वेव फ्रंट जोटा कि आम इंग्लिश से डेफिनेशन कहले वेव फ्रंट ऑफ ए वेव एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स एथरे जिते भी पार्टिकल थे सब क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्मेशन करके एट ए टाइम समान एंगल समान फेज रे आगू को बढ़े एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम
at the same phase of vibration with the same instant of time, the particles go forward or move to propagate in forward direction. Then depending upon the different types of source, we have different types of wavefront. First one is circular wavefront, thus point source, source one is point source and the structure is 2D. Second one is spherical wavefront, source is point source and structure is 3D. Cylindrical wavefront, and that is the extended source, line source, extended source. This one is extended source. We can write cylindrical wavefront with its extended source. Then plane wavefront, all types of light waves, when light waves travel from long distances, then we appear in a straight line path. तो जिते बेले आलोक रश्मि बहुत दूर रू गति करके आसे सेते बेले हमको सड़क स्ट्रेट लाइन भलिया फील हुए, सेटा को आमे कोन कहूचे प्लेन वेव फ्रंट. ऑल टाइप्स ऑफ लाइट वेव्स सोर्स 2D फॉर्मेशन. तो बेसिकली वेव फ्रंट होची एनर्जी रो ट्रांसफॉर्मेशन पार्टिकल टू पार्टिकल समान एंगल रे समान समय रे आगो को बढ़िबे. पॉइंट सोर्स पे स्फीयरिकल सर्कुलर हबो एवं एक्सटेंडेड आउ लाइन सोर्स पे हमर कोन कहूचे जोटा कि सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हबो. फिगरटा करछि तुम आगे. वर्तमान आम पढ़ा हाइजिन्स प्रिंसिपल. सी कौन कही पे हाइजिन प्रिंसिपल पढ़ा पूर्व आम आ गोटे जिन देखा कौन बिफोर वी स्टडी अबाउट हाइजिन्स प्रिंसिपल वी कैन रीड और टीच अबाउट वेवलेट. व्हाट इज वेवलेट? a small portion which is derived from wavefront is called wavelet. And we always in your mind please the direction of propagation and wavelet, the angle between direction of propagation and wavelet is always 90 degree. From this we concluded that rays are always perpendicular to wavefront. Small portion देखो समझते एटा गोटे मन कर वेवफ्रंट पिला मन देखि परछ एटा होची वेवफ्रंट रो एतिक टिके हम काढी आनिमा. यदि काढी आनिमा ए स्मॉल पोर्शन टा को हम सोर्स रो लाइट बाहरिबो ताले एटा प्रोपगेशन लाइट रो प्रोपगेशन आगु को बढ़िबो ता भीतर 90 डिग्री एंगल लाइट रो प्रोपगेशन आ वेवफ्रंट किंबा वेवलेट भीतर एंगल हमर केते 90 डिग्री. तो वेवलेट समस्त जानि परलो ए स्मॉल पोर्शन which is derived from a wavefront that is called wavelet. वर्तमान में now we discussed about Huygens principle. The first principle is each and every point on a wavefront act as a source of new disturbance. Each and every point on a wavefront act as a source of new disturbance is called secondary wavelet, which travel in all the direction with the velocity of light in that medium. Now I draw these wavelet or wavefront. This one is primary wavefront. According to Huygens principle, each and every point on this wavefront, this is primary wavefront. Each and every point, this one is also a point, this one is also a point, this one is also a point. एटा भी गोटे point, एटा भी गोटे point, एटा भी गोटे point. प्रतिटी point, प्रतिटी बिंदु प्राइमरी वेवफ्रंट उपर थिबा प्रतिटी पॉइंट प्रतिटी बिंदु गोटे गोटे सोर्स भाया बिहेव करेंगे. आ से माने भी आगु को ट्रैवल करेंगे क्या सहित लाइट रो परिवेग जेतिकी तार भी परिवेग सेतिकी से डायरेक्शन में से माने आगु को बढ़िबे. ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस. एटा को हम कोन कहूचे सेकेंडरी वेवलेट. एटा कोन कहूचे
सेकेंडरी वेवलेट सब पॉइंट रे हमें करि परिबा सेकेंडरी वेवलेट एटा थिला फर्स्ट प्रिंसिपल इन ए प्राइमरी वेव फ्रंट each and every point act as a source of new disturbance is called secondary wavelets and which are travel in all direction with the velocity of light in that medium. Then second principle is common envelope or tangential surface. That means tangential surface, spherical tangential surface draw around the secondary wavelets. When we draw common envelope or tangential spherical surface draw around the secondary wavelets in a forward direction, that gives the position of new wavefront, and this is the secondary wavefront. This gives जिते बड़े आम कौन करवा ड्र करवा गोटे टेंजेंशियल सरफेस स्पर्शक ड्र करवा से कौन हम से गोटे नुआ पोजिशन तैयारी कला ये से नुआ पोजिशन ना हूँ सेकेंडरी वेव फ्रंट ये नुआ पोजिशन जो तैयारी कला ड्र कलापर से हूँ सेकेंडरी वेव फ्रंट बुझीगला पे देन गिव्स द पोजिशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट दैट इज सेकेंडरी वेव फ्रंट एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम जेकोसी समय आम जो ड्र करदे टेंजेंशियल सरफेस और कॉमन एनवलप इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन से कौन हम से गोटे नुआ पोजिशन या न्यू वेव फ्रंट या न्यू वेव फ्रंट हूँ सेकेंडरी वेव फ्रंट देन आम आउ थे आप्लाय कर आउ थे गोटे गोटे पॉइंट करी देन अनदर एमती आगू बढ़ी बढ़ी चलो जिते ड्र कर गोटे गोटे पॉइंट सोर्स भाया बिहेव करेंगे ताऊपर तुम टेंजेंशियल सरफेस ड्र कर देन से गोटे नुआ वेव फ्रंट भी तैयारी कर तो यहाँ थिला हाइजेन प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल थिला ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट act as a source of new disturbance is called secondary wavelets which travel in all direction with the velocity of light in that medium. And second one is common envelope or tangential surface to all the secondary wavelets in a forward direction that gives the position of a new wave front. This is secondary wave front at any subsequent time. Thank you my dear students. आज केमती कौन लगे पढ़ाटा आपको मत समस्ते कमेंट बॉक्स रे जनइबे आपण सहित मु सब अच्छी मो पिला सहित सब अच्छी भल मंद सबुथिरे किसी भी डाउट हेले पचारे. थैंक यू सो मच.